Hello, friends. Welcome to my channel. A thought came into my mind. It's like this key fear of failure, fear of rejection. What is holding us back? Like, we are afraid. We are not programmed that if there is success, there is failure. If there is wealth, there is poverty. Or if there is health, there is sickness. So they are the same sides of the same coin. They are the different sides of the same coin, and we have to realize that we have to accept it. We do not like to be. We don't want to accept defeat or ugliness. We shove it under the carpet. Brushing it under the carpet and pretending everything is glitzy and glamorous, glitter and gold kind of a thing. दिखावा करते रहते हैं कि we do not address our real issues. Winner takes it all. Hustle culture. No, we have to be number one. मरना है, खपना है, टारगेट्स पूरे कंप्लीट करने हैं, नंबर वन बनना है. मैंने बोला नंबर वन का तो पता नहीं, बट डेली लाइफ में अगर हम लोग नॉर्मल इंसान की तरह भी जिए तो अच्छी बात है. पीपल आर नो लॉन्गर ह्यूमन. मैंने एक चीज़ देखी. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. देयर इज दिस पर्सन इन द अदर विंग ऑफ माई बिल्डिंग. He's a middle-aged person and he has a habit of drinking. So he fell down in the compound and वो बहुत ही चिल्ला रहा था. And I was wondering, in Bombay हर टाइप का शोर आता है. And suddenly I said, ये तो हमारे बिल्डिंग का पर्सन है. And he's like shouting and screaming and nobody is coming to his help because he's drunk and he's fallen down. And I think after 10-15 minutes, 15-20 minutes, I think somebody called up his wife, and his wife came running, and she tried to pick him up, and then she asked help from those passerby, 2 kids. उसके पहले एक कपल जा रहा था. The man tried to help him, but he could not pick him up, but he picked him up and kept him in the side. So I'm just talking कि humanity is dead. We are पैसों के पीछे, status के पीछे. Now see, if you're nice looking and good looking, they want to attach. People want to hang around with you because of your good looks, of your smart looks and healthy, slim. और rich है तो तुम्हारे पीछे, even if you're ugly and फालतू and भद्दा, they want to run behind you. So the society is making us more and more mechanical, heartless, ruthless. बस achieve करना है. शर्म आती है किसी को help करने में. मैंने बोला मैं before I could go, I mean definitely that female came running maybe. So I said maybe I would ask the watchman. So ये क्या होता है? So my mom is like, why should you be bothered? I said, why not? A person is fallen down. We are a human being. How will you? I said I would ask help from somebody. Let the other gents help them. So people are so ashamed and afraid of everything. Like मैंने बोला अच्छा काम करने के लिए भी ashamed and afraid for what? And this person keeps drinking all the time, which I understand is not a good thing, but this person is almost 60 years old. He's almost retired from his government job. He still is on a job. Government में तो रखते हैं लगता है ऐसे drunk लोगों को. I'm just wondering where is the humanity gone? Like, even if you want to help someone, even want to say hello to people make faces like, as they're busy on the phone or they're running away or something. There is no gratitude. Even if you help people, they don't appreciate it. That is also there. So everything is very dramabazi. I personally feel that that we have become very artificial. We have nothing to do with nature or humanity, basic humanity. और कोई शोर मचा रहा है, when we see people being entitled, वहाँ मुंह नहीं खोलेंगे. नहीं जाने दो. मैंने बोला क्या जाने दो? What is there? At least we can go and say ना, don't do such things. कचरा मत करो, आवाज़ मत करो, ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करो. जानवर भी जंगल में ऐसा गंद नहीं मचाते, बिना मतलब के वो भी शोर नहीं मचाते. सीरियसली. बट वहाँ पे डरते नहीं. ये पता है ना, ये कम्युनिटी, मतलब घंटा पता है तो क्या हुआ अगर वो कम्युनिटी है तो. पता है ना, दादागिरी करते हैं, मनमानी करते हैं तो क्या हुआ. मैंने बोला डर के रहेंगे तो ये हमारे सर पे चढ़ते रहेंगे. And we are the ones who encourage all these kind of anti-social elements. We are the ones, and then we complain कि क्यों we always look for this law and order to protect us. Why can't we protect ourselves? At least जितना हो सके उतना.
वाई नॉट निप इट इन द बर्ड. जब ये बढ़ता है, कोई एंटी सोशल बिहेवियर करता है, वाहियात बिहेवियर करता है, हम लोग वहाँ पे मुंह नहीं खोलते, वी नेवर सामना नहीं करना चाहते. नहीं नहीं भाई, हम वाई शुड वी गेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट. मैंने बोला भाग, मुंह घर में तो बड़ा मुंह खुलता है ऐसे लोगों का, पर बाहर तो पिद्दू बन जाते हैं, पांडु बन जाते हैं इन लोग. बड़ा डर लगता है. मैंने बोला ये जो जिनकी कमर खुद टूटी फूटी है, जी इनसे क्या डरना. मैंने बोला जो खुद ही इतने लूजर टाइप है, उनसे क्या डरना. तुम्हें शर्म आती है, यू आर हाई क्लास पर्सन. मैंने बोला तुम लोग की खुद की बिहेवियर भी इतनी कोई खास नहीं थे. नोबडी इज परफेक्ट, nobody. So yes, there are times when you have to speak up, you have to help people or make other people help them. जितना हम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं तो नहीं समझ में आता. ऐसे लोग, अरे वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, वहाँ पे वो और वो, तो मैंने बोला उनके लिए तुम्हें बड़ा दर्द होता है. व्हाट अबाउट पीपल हु आर आस पास है, तुम्हारे घर में कोई सफ़र कर रहा है, उसके लिए तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं रहती है. तो ये ढोंगीपना तो ये टू मच. आई हैड पर्सनल एक्सपीरियंसेस व्हेन आई वाज लाइक, मेरी सर्जरी हुई थी एंड देयर वाज दिस पर्सन हु वाज सो नास्टी क्लोजिंग द विंडोज एंड स्क्रीमिंग एट मी व्हेन आई वाज इन सच अ pathetic condition. So there are people who do that. They think no end of them and then ऐसे behave करेंगे जैसा कुछ हुआ ही नहीं. So yeah, you have to put them in their places कि भाई not done. Your childishness or your stupid behavior will not be tolerated. ये immaturity. हमारे पेरेंट्स भी वैसे बिहेव करते हैं, very silly and immature. Do we have the courage to tell them on their face, just grow up now for once? Let's do this. Chalo, thank you very much. Have a nice day. Bye.